So, good evening everybody. Myself Acharya Vishwendra, and today I am here to discuss optimal physics worksheet. And the topic here is stress, strain, Young's modulus and energy. तो जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था, ऑप्टिमल फिजिक्स वर्कशीट का कॉन्सेप्ट ये है कि किसी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी बेसिक फैक्ट्स, बेसिक टर्म्स और उसके एप्लीकेशंस हैं, उनको हम एक्सप्लिसिटली डिस्कस करते हैं एक शॉर्ट वीडियो में, जिससे आप एक 4 से 5 मिनट की वीडियो में आपको किसी पार्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड सारे बेसिक फैक्ट्स, बेसिक कंसेप्ट्स, उसके फॉर्मूले, रिलेशंस और वेरियस क्वांटिटीज़ के साथ उसके मैनिपुलेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे ज़्यादा बेहतर तरीके से आप परफॉर्मेंस दे सकते हैं, जो आपके परफॉर्मेंस को बूस्ट अप करेगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डायमेंशनल फार्मूला फॉर स्ट्रेस। कोई भी टॉपिक आप पढ़ें, सबसे पहला उसके जो टर्म्स हैं उसके डायमेंशंस और एसआई और सीजीएस यूनिट्स वहाँ से आप स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया, तो वहाँ से आप डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे, यह आएगा m1 l-1 t-2। देन इज डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन, तो स्ट्रेन डायमेंशनलेस होता है m0 l0 t0। देन इज डायमेंशंस ऑफ यंग्स मॉडुलस, तो यंग्स मॉडुलस अगेन इट हैज़ गॉट सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ स्ट्रेस, तो ये होता है m1 l-1 t-2। देन इज डायमेंशन ऑफ एनर्जी, ये होता है m1 l2 t-2। देन इज डायमेंशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी, ये होता है m1 l-1 t-2। देन इज सिक्स क्वेश्चन है स्ट्रेस पे, तो स्ट्रेस होता है परपेंडिकुलर फोर्स या फोर्स मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय द एरिया। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, तो 3 टाइप्स के स्ट्रेस होते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रेन, सो स्ट्रेन इज चेंज इन पैरामीटर बाय ओरिजिनल पैरामीटर। देन इज टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, ये भी 3 तरह के होते हैं। देन है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, सो इसको जो रेशियो है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। देन इज हुक्स लॉ, सो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यही इसकी ग्राफिकल एनालिसिस है कि अगर स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है तो इनका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा, और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी आपका स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हो जाएगा, जो कि tan थीटा होता है। एंड थीटा इज टू बी टेकन विद द स्ट्रेन एक्सिस। तो ये 12 क्वेश्चन है रिलेटेड टू स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस, एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी, देयर टाइप्स, हुक्स लॉ, ग्राफिकल एनालिसिस एंड इलास्टिसिटी मॉडुलस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पे 13th क्वेश्चन है कि आपको 3 ग्राफ्स दिए हुए हैं 1 2 3। तो आप देख सकते हैं कि θ3 इज ग्रेटर देन θ2 ग्रेटर देन θ1। सो दिस implies tan θ3 will be greater than tan θ2 will be greater than tan θ1, and it further implies that E3 is greater than E2 greater than E1. So this is analysis of this particular graph. समटाइम्स थीटा जो है दोनों एक्सिस से दिया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे ग्राफ में आप देख सकते हैं। तो अगर ग्राफ ए की कोरस्पॉन्डिंग हमें यंग्स मॉडुलस निकालना है, तो दैट विल बी tan ऑफ 90 माइनस थीटा, क्योंकि इसमें एंगल जो है वो स्ट्रेन एक्सिस से लेते हैं। तो ये ए का जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है या यंग्स मॉडुलस है वो tan ऑफ 90 माइनस थीटा आएगा, विच इज़ कॉट थीटा। बी के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ से एंगल आपका स्ट्रेन एक्सिस से ही दिया हुआ है, तो वाई बी विल बी इक्वल टू tan थीटा। Another question is ratio of y and yb. So y is cot theta, yb is tan theta. So the ratio will be cot square theta, क्योंकि 1/tan theta आपका cot theta होता है. So cot theta into cot theta, यहाँ से cot square theta आ जाएगा. Then is yb upon ya, so that will be 1 by cot square theta or tan square theta. Then is types of modulus of elasticity. So 3 types we have. Then is energy density. So energy density is energy per unit volume. Then is expression for energy density, so it can be written as either half into stress into strain or half into y into strain square. So these are next set of questions. Let's move to the next another set. So here is energy density can also be written as stress square by 2y. So if we draw the graph between energy density and stress for constant strain, so we can say that energy density is half into stress into strain. So in this case E will be proportional to stress, so the graph will be a straight line, and tan theta will be equal to strain by 2. Next is if we have two energy density versus stress graph for 3 different cases, then as we can see that θ3 is greater than θ2 is greater than θ1, so that means tan θ3 is greater than tan θ2 greater than tan θ1. Next is we have E versus strain graph. So when stress is constant, we can see that E is proportional to strain, so the graph will again be a straight line, and if we need to find tan theta, that will be E by strain or stress by 2, so we can say that tan theta will be proportional to stress.
So if we apply this thing over here, we can see that there are three different energy density versus strain curves. So the graphs are given by ABC, and corresponding to angle C, the angle is greatest. So we have theta C is greater than theta B greater than theta A. So tan theta C is greater than tan theta B is greater than tan theta A. So stress for C is greater than stress for B is greater than stress for A. So this is the analysis. Then there is another graph between E and strain when Y is constant. So in that case, E will be proportional to strain square, as the expression we'll use is E is equals to half Y strain square. So the graph will be a parabola like shown over here. So you have seen that we have solved a number of questions based on all the basic facts, all the basic concepts, all the basic equations, the graphical analysis, as you can see over here, manipulation based questions on them in a single video of a duration of about 6 minutes. So these videos are just an optimization tool for you. So if you feel difficulty in solving questions in exams, if you feel anxiety, nervousness, depression while attempting to solve questions, then refer to the worksheets. Start with the very basic questions. So ultimately you will gain confidence and you will be able to manage the high frequency questions or the high level questions. So ultimately just start working with the very basic things. As you can see, I start with the very basic concepts, very basic factual knowledge, and with progression, I increase the you can say that level of the questions, more complex questions, more graphical analysis, until the last we explain the most typical concepts. So this is how you learn anything. You start with the very basic facts, then you integrate them to form more complex and more complex patterns. So it's all about your ability to learn new things. It's about your adaptability, and ultimately it's about gradual learning, starting with a very simple concepts and then eventually switching to your capability to learn or to solve higher level questions which require complex processing. So in case of any doubt, you can ask in the comment section. Thank you and have a nice day.